Okay. So we will see today the Gajapati dynasty. Okay. So Gajapati rule. Gajapati rule, it was happened or founded by Bhanudeva IV. Okay. And after the weakness and ineffectiveness of later Ganga period pore, so many political chaos was started in Odisha. So to utilize the circumstances, that particular circumstance, an able and military general Kapilendra Dev overthrew the last Ganga ruler and founded the new dynasty, that is Suryavanshi Gajapati dynasty or Solar dynasty. The Gajapati rule in Odisha is quite significant for military conquest. ये कौन करथिले माने देखो मैं एटी देखौछि जस्ट तांकर मिलिटरी कंक्वेस्ट दिस इज Gauda. Gauda means which territory? It is one of the territory of Bengal. Okay, so that from that point to this point also, a vast territory it created by Gajapati ruler Kapilendra Dev. Okay, so and Bhanudeva IV was a weak ruler. आमे देखितलु भी गंगा डायनेस्टी रे जतोले ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी लास्ट क्लास रे आमे पढुथलु देखुथलु Bhanudeva IV was a very weak ruler and he was replaced by his military general Kapilendra Dev, and Kapilendra Dev founded Gajapati dynasty. Okay, and Suryavanshi ruler traced their origin to the god sun Surya Devata, and the title was the meaning of the title was Lords of Elephant. This was the thing, and this is the list of rulers. You just go through it. Kapilendra Dev, Purushottam Dev, माने it just माने एते माने ये एथिरे ई तीन जनकर ही इंपोर्टेंट रोल अछि एंड बाकी लास्ट दी जनकर they are not so much important. Weak ruler or evil ruler. Okay, and so many sources also was created. Literary sources was there to know about the dynasty, like Sanskrit literary works. These were the Sanskrit in written in Sanskrit language. परशुराम विजय अभिनव वेनी samharam is सब संस्कृत रे and these are the Odia works, these are the Bengali works, means these are written in Bengali language, and also as well as Persian works also. Some sources were written in Persian language also, because at that period Muslims also came to Odisha for their establishing their territory. Okay, for their territorial establishment. Tariq Farishta, Tabaki Akbari, Akbarnama, and Burhani Masir. So, roichi. Telugu works भी roichi. Manucharitam, Krishna Raja, Vijayam. So roichi. Okay, now we will see the founder about. We'll see about the founder Kapilendra Dev. Okay, his time period was. This was his time period, and his verse was written in Gopinathpur inscription. This was an inscription of Kapilendra Dev, and what he had done
or his military expedition. These are the military expedition that conquest of Gouda, जोटा मु एबे देखैली गौड़ टू स्टार्ट कांची पर्यंत. Okay, so took up his first campaign against Bengal, defeated Samsuddin Mujahid Ahmad Shah with the help of his minister Gopinath. One minister was there, his very faithful minister, and by the help of his minister, he defeated the Bengal ruler Samsuddin Mujahid Ahmad Shah. Okay, and around with the title Garudeshwara. ଯେତେବେଳେ ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ defeat କରିଦେଲେ, then ତାଙ୍କ title, he got the title Garudeshwara. Then conquest of Kondavidu. Kondavidu was a territory south of the Godavari river. South of the Godavari river. Okay, ए टेरिटोरी एक्चुअली गोदावरी रिवर साउथ रे देखौछि, एई पार्ट रे अछि. This is the and this Kondavidu is under Vijayanagara Empire. Was at that time it was under the Vijayanagara Empire. So ताकू कोंडाविडू को जेतेबेले से कॉन्क्वेस्ट करले. Okay, sorry, it was the south of the Krishna river. I just told Godavari, it was the Krishna river. Okay, then conquest of Rajamundry, defeated Reddys of Rajamundry with the help of his son Hambira. He had two sons. Okay, one Hambira was his eldest son, and by the help of his eldest son Hambira, he conquered Rajamundry. Then also he conquered Telangana. After Krishna Godavari region occupied this Telangana region, he occupied. Okay. Then also he captured Bahamani kingdom also he captured. Okay. Now we will see his contribution towards the Odisha dynasty and माने कौन कौन ग्रोथ हेतले से टाइम रे भी हमें ए जिंसटा को. As an able administrator, he followed and modified the administrative system of Gangas. जने एबल एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब रे से तो जतल कपिलेंद्र देव तांकर मिलिटरी जनरल थिले, and he tried to implement some good policies of Ganga dynasty, Eastern Ganga dynasty's administrative system, and he was vigilant over the administrative system despite busy schedule for constant war expedition. बहुत टाइम से बिजी रहउतले वार रे, बट एज वेल एज से तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पर्सनली ऑलवेज माने तांको नजर रे रखुतले, एंड एबोलिश्ड सम इंपोर्टेंट टैक्स लाइक सॉल्ट टैक्स. से सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करथिले, एंड बहुत रिलीफ मध्य करैथिले ब्राह्मण्स मानक पई. Brahmins were relieved from some more taxes also, and his administrative policy was based on religious policy proclaimed on the name of Lord Jagannath. That is a very much tactic policy, because our subjects, means in that time जेतेबेले तांकर सब्जेक्ट्स माने तांको जेतेबेले कोनसी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ना माने तांकर कोनसी भी इंटेंशन थिबो जे मु एई पॉलिसीटा इंप्लीमेंट करया पई चाहेबी, बट से जदी ताको डिक्लेयर कर देले इन द नेम ऑफ
Lord Jagannath, then subjects were eagerly ready to accept that policy. से tactic से use करके एई policy टाकू से एथरे तांको administrative policy रे include करैथिले. And his famous proclamation engraved his inscription quelled down the feudatories and माने एई जिंसटा तांको कोन माने नेबरिंग किंगडम्स एंड वोन द हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जहा द्वारा से एई जो पॉलिसीटा पाई जहा भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करथुले भगवान को नारे दियों को नारे तो से पॉलिसी पाई से समस्तंकर गुड फेथ ही गेन्ड ए वेरी गुड फेथ अमंग ऑल समस्तंकर प्रिय पात्र ही पारथिले. ओके, so that he was eager to implement everything in the name of Lord Jagannath. So this was his contribution as an administrator, very capable administrator. Now we will see as a military genius, okay, a military hero. Initially, he had acquired an important position in the Ganga army, jota मैं आगुरो कहले वर्तमान designated as Brahmavara, okay, military general, okay, by Bhanudeva IV. Then what he had done, he had usurped the Ganga throne by a military coup. से जत्ते बड़े माने बिजी थिले आउ माने अलगा वीक पे ही जाइथिले से टाइम रे तो से टाइम रे से मिलिटरी coup करके तांको डिथ्रोन कर देथिले. And this was the result by putting an end to the Ganga rule, hold the title Gajapati. तो गजपति टाइटल तांको केमती मिलला जत्ते बळे से गंगा रूल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देले तापर से गजपति टाइटल होल्ड करले. ओके, देन जत्ते बळे बेंगल पार्ट को से एक्वायर करथिले जो गौड़ पार्ट जोडा गौड़ बोली हमें कहूछु, देन ही होल्ड द टाइटल गौड़ेश्वर. लाइकवाइज जत्ते बळे ब्राह्मणी एंड बिदर पार्ट को जत्ते बळे से कंक्वायर करले, then he hold the title Kala Bargeshwara. Likewise, Vijayanagar ko Navakati, Karnataka. Because at that time the population was something 9 crores approx in that empire, Vijayanagar empire. Okay, so these were the titles he had hold by acquiring the respective territories. And he created a very vast empire by defeating his contemporary rulers like Muslim rulers also, Humayun Shah, Mahmud Shah, and the Salwa Narasimha. Okay, and stretching his territory, he has created or established stretching from the river bank of Ganges in the north to that of Kaveri in the south. Okay, so tankar territorial expansion ta ette adhiko, and he was so much powerful at that time that monarchs of Delhi, Jaunpur, Malwa felt the weight of his power also. माने से जो पूरा भारत वर्ष रे से फेमस थिले तांकर एते पावर एक्वायर से करथिले, पावर एक्युमुलेशन तांकर एते अधिक होइतिला एंड एते मिलिटरी एक्सपेडिशन करथिले. he was so much important personality at that time. Okay, so for his reputation, increased reputation, Odisha was also taken as a standard bearer of Hindu culture and military strength. Because तांको power पाई his elephantry was best and largest in India. तांको पाकरे बहुत his elephants, large amount of elephants he had, and in war expedition also he had done very in an efficient manner. Now we'll see his contribution as a great builder. Okay, so 2 concentric defensive stone walls, जोटा कौन फर्स्ट होउची मेघनाद प्राचीर,
our famous Puri temple, ताकू जे सराउंड करची जो प्राचीर मेघनाथ प्राचीर, it was built in his reign. Okay, and one is also Kuruma Prachira. Okay, and also he had built Narendra tank at Puri, and built Kapaleswara temple at old Bhubaneswar. This is the Kapaleswara temple. Okay, so he had done so much numerous temples and walls. He was also rather he was busy with so many military expedition, but he had not forgot to learn some literature, because he was a very great patron of literature. Okay, a great scholar of Sanskrit. His play Parsuram Vijay, he had written Parsuram Vijay, and many Sanskrit poets also flourished during his reign. Okay, like Vishwanath Kaviraj, who had written Sahitya Darpana and Chandrakala Natik. So, a famous poet, Vishwanath Kaviraj, was present in his period. And the first renaissance of Odia language, Odia literature, started during his period. Okay, and Sarala Das, because Sarala Das, Odia Mahabharata, and Vilanka Ramayana, Chandi Purana, these were the valuable things, or very um, precious things which are written and helped in the introduction or the Renaissance period in Odia literature. এই ତାଙ୍କରି ପିରିୟଡ ରେ ହିଁ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ବହୁତ, ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ବହୁତ ପ୍ରକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି. Okay, so this was about the reign of which king? Kapilendra Dev. Yes, absolutely. Okay, then another king or his younger son Purushottam Dev was had been taken the throne, and in spite of a younger son of Kapilendra Dev, he ascended Purushottam Dev ascended the throne, but had to fight with his elder brother Hambira Dev, jahanko help रे से territorial acquisition करथिले तांको father, and other feudatories also who came to his support. हम्बीर देव को जो माने भी सपोर्ट करूथिले अदर फ्यूडटरीज सेमानक सहित भी तांको vigorous fight करिया पे पड़थिला, बहुत टाइम लागिथिला, बहुत माने it was not a fight of days or months, years also was passed in to fight with his elder brother, but at last he got the throne, and his father made him the king. Okay, then estimate of Purushottam Dev was he was a very great diplomat. तांको फादर तो जहाँ भी सब माने implementation policy implementation करथले in the name of Lord Jagannath, so this was a tactic used by his father, and he was also a great diplomat. When there was a trouble at the time of his accession, revolt of Hambi, तांको बड़ भाई जेतले revolt करले, so he diplomatically solved the problem and brought normalcy inside his empire. Likewise, after his accession, abolished the Chaukidari tax. Salt tax was abolished by his father, and he abolished the Chaukidari tax, which was imposed previously on Brahmins, and also renewed some old grants to Brahmins. Okay. So, in order to legitimate his position on Suryavanshi,
तो माने एटा तांको एबल करेले तांको बहुत हेल्प करला आसी से तांकर मजबूत करि पाले तांकर. So being an opportunist like his father also, he attacked Bahmani kingdom because it was at the time it was weak and recovered the lost kingdom of lost his father's kingdom, Rajamundri region and Kondavidu fort. Okay. And during his time, boundary of Odisha, one kingdom also he had acquired, Udayagiri Rajya from Salwa Narsimha. That territory also he had acquired. And during his time, boundary of Odisha did not expand. Okay. माने से जोटा को माने लॉस्ट किंगडम तांको फादर जो लॉस्ट टेरिटोरी गुडा थिला ताकू से एक्वायर करले बट फर्दर से एक्सपेंशन आउ he didn't want to move further expand his territory because he was the he loved to be peaceful. His reign was peaceful, which created a circumstance for growth of Odia literature. Okay. से फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन को पसंद न करी जहा टेरिटोरी तांकर हरै दिथिले ताकू से ताको एक्वायर करले एंड ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर को ताको प्रॉस्पेरिटी ताको प्रॉस्पर कराइले. सो नो अटैक्स ईदर फ्रॉम द नॉर्थ ऑन साउथ ऑन ओडिशन एम्पायर. तो सेथि पई से जेहेतु ही वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट डिप्लोमेसी तांको बहुत भलो भाबरे आसुला तो आउ किसी अटैक्स मध्य तांको ऊपर नॉर्थ साइड रु कि साउथ साइड रु आउ फर्दर हेला नाही. ओके. Then as a builder also we will see his contribution. Sundar Madhava temple at Ganjam, Purushottam built Sundar Madhava temple. Okay. And one of his vessel installed an image of Gopal Krishna at Udayagiri region, जोटा से acquire करथिले से territory टाकू, which Krishna Devara had taken away to Vijayanagar after his conquest on Udayagiri Rajya. And founded 16 Brahmana Sasana and made lavish land grants. ये सब grants से ब्राह्मण शासन 16 ब्राह्मण शासन एस्टाब्लिश करैथिले और न्यूमरस लैंड ग्रांट्स से प्रोवाइड करथिले तांको सब्जेक्ट्स मानन को. ओके. दिस वाज अबाउट द Purushottam Dev. Then one important king, Pratap Rudra Dev. He was the third Surya kingdom emperor of Kalinga and was the last in the long list of Kalinga emperors. Because he had his reign was very long, approximately 44 years. During his reign, downfall of his empire started, and soon after his death, the vanished away. They are vanished away. Surya empire or Gajav, solar dynasty was vanished. Okay. Just and his contribution was towards learning and literature. Highly cultured king and a great patronizer of Sanskrit learning and literature. His writing Saraswati Vilasam. Okay. It was a famous law book of Hindus. Saraswati Vilasam. And during his time, Rajguru Godavari Mishra also present during his reign, who had written Joy Chintamani, Achar Chintamani, Harihara Chaturan. These are those were written by Godavar Mishra. Okay. And Kabid Indima
Jivadeva Acharya was also present at that time, who was the writer of Bhakti Bhagavata Mahakavya and Bhakti Vaibhava Nataka. So we saw Renaissance of Odisha literature also reached its zenith during his reign. During his reign, Renaissance of Odia literature also happened, reached its zenith. Okay. Now, the age of Panchasakhas. Panchasakha, do you know about Panchasakha? अरे भाई के पंचसखा विषय के जानी चंती? Yes, sir. Okay, tell me then. Balaram Das, Jagannath Das, Achyuta Das, Ananta Das, Jaswanta Das. Okay then. Balaram Das, Jagannath Das, and last is Balaram Das, Jagannath Das, Achyuta Das, Ananta Das, and Jaswanta Das. okay. So these are also present during his reign or during his period. So this was about the Gajapati, Suryavanshi Gajapati dynasty. Okay. Now we will shift to the पूरा शिफ्ट कर जाओ वर्तमान because it was एटा ही मेंशन थिला गजपति डायनेस्टी सिलेबस रे. Then we will see the resistance movement in Odisha, and the resistance movement re these two topics are present. One is Paika rebellion and another Veera Surendra Sai and revolt of 1857. Okay, so the resistance movement was happened. Why this was happened? Because to resist the foreign power, especially the British rule. बहुत पावर तो थिले फॉरेन रो बहुत पावर माने ओडिशा को आसिले, but yearly resistance movement was only meant for to against the British monarch or British company rule. Okay, से टाइम रे कंपनी रूल ही थिला ना. Then 1857 ପରେ ही कंपनी रूल को एबोलिश करिकी ब्रिटिश इंडिया और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्टार्ट ही थिला. Am I right or wrong? Yes, sir. Just hang on a second. Yes. Odisha's contribution toward the history of anti-British uprising and the resistance movement
the pre-nationalist era is quite impressive. The armed class and annexation of Khurda. First होची जेतेबेले आमे जदी देखियो रेजिस्टेंस मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट होची annexation of खुर्दा जेतेबेले 1803 रे ब्रिटिशर्स माने कैप्चर करले ओडिशा से टाइम रु 1804 रु ही स्टार्ट हितला रेजिस्टेंस मूवमेंट जोटा आमे जानूछु एटा टिके जस्ट ताको मु तो मेंशन करी नाही ताको जस्ट नोट करूथबो खोर्धा अपराइजिंग परे तार जस्ट 13 years परे yes just 13 years परे 1804 13 years परे another rising was happened, that was the Paik rebellion, because this is the first uprising, this is the Khurda uprising was the first, then also prolonged resistance like resistance in the territory of Parla Kemundi and Ghumusur ये सब किछि मेंशन नहीं सिलेबस रे बट आगुरो ये सब जिंसोटा रहिथिला हालांकि यार क्वेश्चंस तो आसीनी बट घुमुसुर पाल्ला खेमुंडी एंड वाइडस्प्रेड रिबेलियन ऑफ द खून्स एंड अपराइजिंग इन अनुगुल तापरे एटा मेंशन अछि सुरेंद्र साय चाकी खुंटिया in the contribution of Surendra Sai, Chaki Khuntia, and many others in the revolt of 1857. Then also some uprising were happened in the princely states of Keunjhar, Baud, Mayurbhanj, Nilgiri, Khandapara, Saraikala, and Kharasua, Athamalik, Kalahandi, Gangpur. In these areas some uprisings were happened in that time period. Okay, so first जेतबेले खुर्दा अपराइजिंग हेइथिला खुर्दा अपराइजिंग तो सिलेबस रे नाही बट मु जस्ट माने एमती दीटा तीनटा सेंटेंस रे कहि दउची बिकॉज़ व्हेन जेतबेले 1803 रे ब्रिटिशर्स माने ओडिशा को एक्वायर करले से टाइम रे कोन प्रॉब्लम हला जे खुर्दा किंग को से जेतबेले कटक तांकर जो बारवाटी दुर्ग को जेतबेले से फोर्ट को एक्वायर करनेले सो किंग वाज वेरी मच अनप्लीजेंट बहुत जो माने भीषण रागी होले आउ से ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट रे ही रेबेलियन करबा स्टार्ट करले एंड वन वेरी मच एबल कमांडर हिज नेम वाज can you tell me his name was बक्सी जगबंधु no Bakshi Jagabandhu was had come in the that Paiko rebellion but one commander yes that his name was Jai Rajguru. Okay, so he was से ही दायी थिले खोर्धा अपराइजिंग करिया पई एंड जते बळे इंग्रेज ब्रिटिशर्स माने जते बळे जस्ट मेंशन भी कर दूची खोर्धा अपराइजिंग विषय जस्ट ब्रिटिशर्स जते बळे कॉन्क्वेस्ट करले 1803 so सेते बळे कोन हला से आउ they had no oblige
for Khurda king okay and the king was very much unpleasant when his territory like Rahang, Serai, Sobbitskud ଏସବୁ come under British control as well as Britishers captured Baravati fort. So this angered the king ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ruler ବହୁତ upset ହେଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି so ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ started rebellion against Britishers. Okay, so it was with the help of Joy Rajguru. Yes, one the king was Mukundadev II. That is the तो तापरे जेतेबेले बहुत रेबेलियस एक्टिविटी ହେଇଛି से बहुत किछि तापरे ताको सप्रेस करिया पे ब्रिटिशर्स माने बहुत ट्राई करचंती देन बैटल ऑफ बरुणई ହେଇଛି बैटल ऑफ बरुणई was happened then capture of बैटल ऑफ बरुणई ହେଇ साला परे गंगमाता मठ पाखरे गंगमाता near the गंगमाता मठ capture of राजा खुर्दा then what happened Raja Khurda and Joyraj Guru also was arrested. Okay. Then Joyraj Guru ଯେତେବେଳେ ହଉଛି arrest ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା arrest କରାଇକି ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲ he was sent to Bengal ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେଇଛି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେଇଛି ଓକେ and he was ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, he was regarded the mastermind for the rebellion against the revolt against British. Okay, so and treated as the arch enemy of the British. And was sentenced to hang till death. But what happened on 6th December 1806 at the place of Baghi Tota, Medinapur. Two legs of Jairaj Guru were laid to opposite branches of banyan tree. And these branches splitting his body into two parts. Thus, he was made Shahid in a brutal manner. Likewise, in this way, he became the first martyr of Odisha. During British regime. So this was the Khurda uprising. ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏରେ କହିଥିଲି ତାକୁ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କେମିତି ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବରୁଣେଇ ତା ବହୁତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭଲି ବହୁତ ଅଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ସିଲାବସ କୁ କଭର କରିବୁ ସୋ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଦିସ୍ ୱାଜ ଏ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ରିଜନ ଫର ଦି ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଥିଲା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତାପରେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଯଦି ମାନେ this was actually the history. Okay, this was actually the history. The Mukunda Dev, that king, he submitted a mercy petition also for to free for his innocence. Okay, mercy petition to the king. To British government. For what? For
pleading is innocence. ମାନେ I am very much astonished. मतलब ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ମର୍ସି ପିଟିସନ ବି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ବେଗ କଲେ and pleading is innocence କଣ ପାଇଁ ନା ଯେ ଯୋଉ related the ଖୋର୍ଦ୍ଧା uprising. सर Yes. सर एटा तो गोटे जिनस अछि जोडा कि सुनले खराब लागे आ गोटे जो जय राजगुरुंकर कैप्चरिंग नै कि आ गोटे जिनस हम पढिथिली Okay, tell me. सर जय राजगुरु एक्चुअली तांको जणे लेडी थिले जे कि लाइक करथले तांकरी आउची जो रेबेलियन भितरु किंतु जय Yes, yes. राजगुरु मना कर देथिले कि नै से तांक सहित फैमिली करि परिबे जेहेतु तांको फ्रीडम मूवमेंट रे पार्ट न बार अछि माटी मा ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଅଛି. Yes. आज्ञा तो सी के सेपटे राग रखले आ माने चाहिले कि ने हो कैप्चर करिया पे जिंस बनेया पे तो से कोन कर के ब्रिटिशर्स माने एक कथड़ा जानिले से लेडी को सहित ताक नाम भूल जाउची मु बट से लेडी को टाई अप करनेले कहले कि तुमे हमकु तांकर ठिकानाटा कहि दियो कोठी Okay. अछंती. Then at that time he Britishers caught himself caught Jairaj Guru. हां बस से सेपटे कहि भी देले तांकर आ सेपटे तांकर जस्ट डेथ भी गला. सो ସେଇଟା ଏଇଟା ହିଁ ହୁଏ actually ଆମେ ଯଦି ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଏଇ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଚରସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଟ୍ରେଟର ସବୁବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଆଉ ସେଇଥି ହିଁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତିକି ଟାଇମ ଲାଗି ଯାଇଛି ଟୁ ଗେଟ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫ୍ରମ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କେବଳ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ହେଉଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ତୁର୍କିଶ ପଲିସି ସବୁବେଳେ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ତୁର୍କିଶ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରି ବା ପଛପଟେ ୱାର କରିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ରାଜବଂଶୀ ବା ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ସୁଲତାନେତ ପିରିୟଡ ବି ଦେଖିବା ଯେମିତି ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ବି ଯଦି ଦେଖିବୁ ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିସି ଅଛି एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार माने जंग में सब किछि जायस तो सब बेले से माने पछरे ब्रिटिशर्स माने भी ताको बहुत भलो भाबरे फॉलो करंती बट जो एक्चुअली जोटा वार पॉलिसी जे सब बेले माने जेमतिका निरस्त्र काहा ऊपर वार करिया कथा नु एंड कि जदि समझौता पाई आसुची किबा ताकू ये करिया कथा बट एई सब पॉलिसी माने एई गरदारी पॉलिसी को फॉलो करिकी टेरिटरी सब एक्सपांड करचंती आ ताकू पूरा फर्दर आगु को नेइले ब्रिटिशर्स माने आगु को नेइ चंती ओके सो दिस वाज दिस थिंग एंड he the king also did not hesitate okay but the king also did not hesitate to tell that Joy Rajguru was only responsible for the whole revolt activity against British. तांको एई कारण ପାଇଁ ହିଁ ସେ होची तापरे ब्रिटिशर्स माने तांको फ्री करी देइथिले ओके so this was the thing about Khordha uprising and just after the 13 years of that Khordha uprising another great rebellion
अच्छा, by the way, rebellion, uprising, these were the same things. Okay, rebellion, uprising, but ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସମାନ, ବଟ୍ ରିବେଲିୟନ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ରେ ଦେଖିବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲ ରେ ଦେଖିବୁ କିମ୍ବା କିଛି ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଦେଖିବୁ, ଯେମିତିକା ରିବେଲିୟନ ରୁ ଥାଏ ରେବେଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯାଏ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନଙ୍କର, ବହୁତ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, that will be um, told as uprising. Okay, so ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି difference ନାହିଁ. So under the leadership of Bakshi Jagabandhu Vidyadhar Mahapatra, Paiko rebellion was happened. Okay, the commander of Mukundadev II of the king of Khurda, ସେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଫ୍ରି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ. Then again one of his commander, ସେ ହଉଛି ପୁଣି rebellion, ପାଇକ rebellion start କଲେ against the British rule. Okay, and this was the plan or the result of the plan. Result कौन थिला? That पाइक rebellion टा हଉଛି result थिला. And the plan, what is the plan behind it? Plan टा कौन actually थिला? Plan टा actually to take people of all categories, all categories of, irrespective of any caste, religion, creed, sex, etc. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ against the British. ସେଇଟା ତାଙ୍କର ambition ଥିଲା. କାହାର ambition ଥିଲା? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କର, ତାଙ୍କର ambition ଥିଲା. Okay, so ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ ରେ actually ଆମେ ତ ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ ତ ପଢିଲୁନି, ସେ ଟାଇମ ରେ ମୁଗଲ ବନ୍ଦୀ and ଗଡଜାତ ତାଙ୍କ ପିପଲ କୁ ବି ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ରେବେଲିୟନ. ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଗଲ ବନ୍ଦୀ means what? Direct administration of Mughal. It is the indirect or ମାନେ direct ଗଡଜାତଟା ଥିଲା ହଉଛି କଣ, direct kingship under, but ସେମାନେ direct king of that region, but ସେମାନେ tribute ଦଉଥିଲେ ମୁଗଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, tributes. Okay, अच्छा, ଆଉ ଏଇଥିରେ actually just one second, ଏଠି actually ବହୁତ କ୍ଲାସ ମାନେ ଯୋଉ add ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଟାଇପ ର, ଯେମିତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ add କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ
ସେଥିପାଇଁ ସେ पेज टा एठी just a second. Yes, ସେଥିପାଇଁ ସେ to add Foxy ଜଗବନ୍ଧୁ ब्राह्मिन्स ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ add କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ओके ଦଳାଇସ୍ and ଦଳବେର they are the warring class ओके they were the warring class माने ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଲଢୁଥିଲେ ଲଢିବା କ୍ଲାସ ସେମାନେ ओके and also picus they are the martial class because they knew the martial art techniques so they are called so martial class and military also and others अन्य ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ये କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ओके but this was a though ସମସ୍ତେ join ହେଇଥିଲେ but it was failed ସମସ୍ତେ ତ एकत्रीकरण ହେଇକି इंग्रेज विरुद्ध लड़ेको चाहुଥିଲେ but it was failed because of people were was unable to understand the understand and implement the ideas of elimination British rule eliminating or elimination of British rule okay so these were the plan and people of Odisha somehow अच्छा एटा तो प्लान थिला बट एठी हमें देखिबा जदी ओडिसा रे पीपल माने वेलकम्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्हाई बिकॉज से काहे को वेलकम करथिले दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग ना बट दे आर फेड अप with the oppression of or austerity of Maratha ruler ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମରାଠା ରୁଲର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ବ୍ରିଟିशर्स हेल्प करिवे and Britishers are much माने तांको सहित ସେମାନେ कंफर्टेबली ସେମାନେ रूल भी करि परिबे आ लोक माने सब्जेक्ट्स माने भी प्लीज हेई परिबे आ मराठा मानको ऑपरेसिव रूलिंग रु ସେମାନେ बची परिबे बट प्लान तांकर उल्टा हेई गला ब्रिटिशर्स माने तांको ठार आहुरी 20 गुणा 50 गुणा आहुरी अत्याचार एक्सप्लॉइट करिया स्टार्ट करले एक्सप्लॉइट much higher than Maratha आर ब्रिटिशर्स मानको
Okay. जोटा कि कहली होप एंड एस्पिरेशंस वर shattered on the rock of frustration when they experienced British authority, British austerity. Okay. Now we will see the causes of the rebellion. What are the causes? So many causes were present. जोटा थी first जोटा मैं कहली जो execution of Jairaj Guru, that was a very much reason. Okay, one reason if you will see, then the defective agrarian policy related to economic economic policy जो थे high amount of revenue collection was decided to collect high amount of taxes from subjects. But what is a defective method of collection? माने आमे ब्रिटिशर्स माने सब्जेक्ट्स मानतु मराठा मान को ठारो बहुत अधिक मराठा मान तो नौथले रेवेन्यू नौथे कलेक्शन करूथले बट तांका ठारो भी much and more revenue collection was done by Britishers from the subjects of Odisha. And changing of prevalent land revenue system, this was also one changed policy. Land revenue system रे Britishers माने बहुत changed आनथिले changing आनथिले जेमती जागीर्स of दଳ बेहरा दलाई पाइको and others were come under rent roll. ସମସ୍ତଙ୍କୁ को तापर कर दवा पे पड़िला आगु केवल टैक्सेस पे करथिले सब्जेक्ट्स माने but these militia also ex militia not they are not served under British rule, but these ex militia also had given the rent roll. Okay. आउ किछि जो माने भी समान जो माने होचंती ब्रिटिश मान को अंडर सर्विस करले किछि समान को भीतर किछि रहिले हुज सर्विस वाज रिटेन्ड समान को ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड तांको डिस्ट्रीब्यूट करा गला तांको पाखरे. दिस वाज द थिंग. अच्छा जागीर लैंड्स also covered extensive tracts, बेस्ट पोर्शंस ऑफ द कल्टीवेबल बहुत माने उर्वर जमी बहुत जागीर्स मान को भितरे बहुत से सब जमी को कवर करथले जागीर्स. सो डीपली इन्फ्लुएंस द जते बेले एई सब जिंस उडा एई सब जागा उडा जते बेले ब्रिटिशर्स मान को पूरा फुल कंट्रोल रे पळेला आउ कोनसी भी जागीर्स माने पाई पाले नाही जो एक्स मिलिशिया माने थिले जो दଳ बेहरा एंड पाइकस दळाइस तो से माने भी जते रेंट पे करले आ से माने आ ता ऊपर तांकर किछि होल्ड भी रहिला माने जोटा से माने फ्री रे पाउतले आ सेटा तांको ऊपर हेवी टैक्स तांको दवा पय पड़ले तो जोटा डीपली इन्फ्लुएंस द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एक्स मिलिशिया. So this was a economic cause for the rebellion. One also end of hereditary rights. What was that? British removal of Bakshi Jagabandhu from his hereditary right of commander of Khurda militia and his ancestral land confiscation also caused a deep resentment among the subjects, among the people known to Bakshi Jagabandhu. Okay. Hereditary rights also one cause.
like defective judicial system and policing police administration also. Judicial system भी defective थिला केमिति जे मराठा रूल रे under Maratha rule judicial system was simple. judicial rule ta simple रही but justice was simple, judicial system was simple but not well organized, because जहाँ राजा कहबे सेटा ही लॉ, सेटा ही नियम। मराठा राजा जहाँ कहबे जो राजा जेतेबेले किंगशिप जेतेबेले थिला राजा ही होची सर्वे सर्वा, तांकर तांकर जो डिसीजन टा सेटा भगवान कर डिसीजन, कारण से होचंती भगवान कर नुमाइंदा जोटा कहजे भगवान कर जो तांकर प्रतीक बा तांकर होची प्रतिबिंब राजा को कंसीडर कराउतला किंगशिप टाइम रे। सो जुडिशियल सिस्टम वाज सेतबेले से सिंपल थिला, किंग्स टाइम रे तो जहाँ राजा कहबे तांको मुखरो निश्चित बाणी हेउची गोटे डिसीजन बा लॉ। बट जेतेबेले ब्रिटिशर्स माने आसिले सेतेबेले न्यूमरस चेंजेस वाज अकर्ड, माने बहुत प्रकार चेंजेस हिची बेंगल, बिकॉज सेतेबेले तो ओडिशा टाको से माने बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर रे रूल करथुले ना, तो बेंगल रु ही लॉ सब कोडिफिकेशन हे की कोडिफाइड लॉज गुडा तापरे से तांकर रिटन ताको माने रिटन वे रे ताको माने समस्त पाखु रीच करौतले पहुंचौतले। ठीक अछि आउ तो सेति पई जेतेबेले बहुत गुडा रिटन लॉ आसिला सेटा तांकर जो सब्जेक्ट्स मानको ओडिसा सब्जेक्ट्स मानको नॉट फील गुड, माने से माने सेतिरे एक्वेंटेड नथिले, सेति पई सेटा तांको माने प्रॉब्लमेटिक माने क्रिएट हैला हैला। आउ बहुत माने सेतिरे बहुत माने कोन डिवाइडेशन भी हेयला, माने से माने गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे ताको इंप्लीमेंट करले, जेमती जुडिशियल मजिस्ट्रेट एस्टाब्लिश करे सेतबेले तो कलेक्टर को पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ रेवेन्यू मजिस्ट्रेट माने सब प्रकार पावर तांको पाखरे से रखी पड़थुले। तो जोटा द्वारा तांको भी बहुत माने ब्रिटिश ऑफिसर्स मानकु बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ बहुत माने हेक्टिक शेड्यूल तांकर रहउतला। तो जो द्वारा से ठीक भाव रे पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कर पानुतले। तो जदी पॉलिसी इंप्लीमेंट न होला सेटा लोक मानक पाखरे पहुंच पाले, बिकॉज दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द सब्जेक्ट, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ମାନେ ରହୁନଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବି ଠିକ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଡିନାରୀ ସବଜେକ୍ଟସ ମାନେ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବ୍ଲେମେଟିକ ହଉଥିଲା। ଓକେ ଆଣ୍ଡ ମରାଠା ପିରିୟଡ ରେ କଣ ଥିଲା, सिंपल तो थिला बट नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड आउ इजी थिला, जस्टिस जस्टिस वाज इजी but sometimes कार म्यूट ऑन हो गया बोधे, चेक कर दियंतु। पनिशमेंट वाज मु भी लिखि दउछु मते क्रूएल, क्रूएल तो ब्रिटिश टाइम रे भी थिला बट किंगशिप रे। सो दिस वाज ए रीजन for the happening of the Paiko rebellion. Okay, and another reason was salt monopoly. Okay, salt agent, because a salt agent मान को बहुत पिटी थी। पाइको जेतले रिबेलियन करथिले आगे से माने कटक पहुंच के एई सॉल्ट एजेंट्स मान को धर के बहुत पिटथिले से माने। ओके तो सॉल्ट मोनोपोली कोन थिला जे ओडिशा तो एक्चुअली लॉन्ग सी कोस्ट जेहेतु ओडिशा रे, सो प्रोड्यूस्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट।
So resulting in increasing the greediness of British. So they tried to establish a monopoly on salt production. Britishers माने salt production टा देखिले इथिरे बहुत तांकर बेनिफिट बहुत अछि एटी जेहेतु अवेलेबिलिटी भी अछि आउ किछि इन्वेस्टमेंट करिया पे भी नाही समुद्र को जीव केवल लुण मारी के पळे आसी किछि इन्वेस्टमेंट नो इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट तो सेटा जेतोले से माने देखि देले तांको पूरा से माने पूरा मेड ही गेले पागल ही गेले पूरा एते प्रॉफिट तले से माने ई जिंसटा को एक्वायर करिया पे चाहेले मोनोपोली तांकर बढ़ाय पे ट्राई करले तो जो जमीदार माने थिले जो लोकल जमीदार अंडर रे ही ए सब सॉल्ट बिजनेस टा माने फ्लोरिश्ड थिला तो ताकू से माने साइडलाइन करले ओके सो एज अ रिजल्ट कॉमन पीपल वर सफर्ड एक्सट्रीमली बिकॉज काहे कि ना कॉमन पीपल मानन को से माने जते बेले कोन ना कॉमन पीपल मानन को पाखरे आ सॉल्ट पहुंचिला नाही तो से माने डाली रे आ लुण पके पाले नाही से माने केवल बिना लुण वाला डाली भी तो सेतबेले एते माने नथिला जहां भी सेबरे परिया परिया जदी किसी तरकारी पकारी कहउथबे खाउथबे लुण पके परंत आ जदी गोटे तरकारी लुण पड़ी नथिवो ताले सेमान को केमती लागिवो भल लागिवो कि सेमान को आदु भल लागिवो नै हमें यू गाइज आल्सो गोटे तरकारी सब बेले माने किछि भी नथाव एटलीस्ट राग फाग किछि नथाव जदी लुणटा भी नथिवो ताले से खाद्यटा खाद्य भले लागिवो नै ताले माने चिंता करो से टाइप रो प्रैक्टिकली तमे निजको से टाइमलाइन सहित जदि तमे भाबिबो जदि से माने लुणटा भी जदि पाई पर नथबे ताले माने को कष्ट जीवन तांको माने से माने अतिबाहित करथु जदि हमर जो बेसिक नीड जोटा लुण सेटा भी जदि हम पाखरे न पहुंचथिबो से माने बिना लुणर तरकारी खाई के रहउथबे ताले तांको केमति लागुतो से माने तो माने इच्छा करथु माने पछे मरि जीवो किंतु ब्रिटिश मान को माने पूरा काटी दबो एमति का तांको फील होतु ठीक अछि ना so as a result of common people were suffered extremely ଆଉ ଏଇ ସେ ଲୁଣକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ये बिजनेस माने जो खुचरा व्यवसायी खुचरा नुह जो ये व्यवसायी माने जो एक्सपोर्टर माने जो थांती बहुत ह्यूज टन टन जो माने एक्सपोर्ट करंती से एक्सपोर्टर मान को से माने एक्सपोर्ट रे लगे देले से बिजनेस मान को लगे देले एंड किंग्स एंड जमीदार्स स्टार्टेड रेजिस्टेंस जमीदार्स मान को साइड करे देले सेठी समान सेट पे रागिले एंड ताकू से माने एक्सपोर्ट करले बाहर को पठेले आ अवेलेबल करेलेनी लोकल पीपल मान को पई ठीक अछि तो सेटा तांको बहुत इट क्रिएट अ वेरी एंगर मोमेंट among them and defective currency system was also one reason salt पर monopoly गल now ସେମାନେ ଏବେ करेंसी सिस्टम टा को भी चेंज करया पे ट्राई करले कोन डिफेक्टिव करेंसी सिस्टम तांकर काहे कि ना जतेबेले कोन चलथिला माने टुवर्ड्स 4th की 5th सेंचुरी एडी रु भी कौड़ी सिस्टम एक्चुअली ओडिसा रे प्रिवेलेंट थिला ओके कौड़ी सिस्टम as prevalent and it was also present during Maratha rule also मराठा माने भी इतरे ही रेवेन्यू कलेक्शन अंकर एई कौड़ी सिस्टम रही से माने नौथुले मराठा रूल तो जतबेले कौड़ी सिस्टम टा को कोन करले से माने ब्रिटिशर्स माने जतबेले आसिले सेतबेले चेंज कर देले अच्छा मु ये सिस्टम टा पढ़ दीजिए हां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं देखे देबे आपको ओके तो कोड सिस्टम जते बेले ब्रिटिशर्स माने चेंज करले ता बदल से माने कोन आनले
बिकॉज कोड सिस्टम टाको चेंज करिबार भी ब्रिटिशर्स मानकर गोटे रीजन थिला बहुत माने ये रे बहुत एरिया रे तंक माने सेटा को माने बस्ता बस्ता जिंस तांको नबाको पड़थुला ठीक अछि तो सेति पे से माने सिल्वर कॉइन ब्रिटिशर्स माने इंट्रोड्यूस करथिले बा सिक्का ताको को सिक्का ये कौड़ी भी जो कौड़ी कोटू इंपोर्ट होउतला कोटू आसुतला मालदीव्स रु मालदीव्स रु सेतेबेले कौड़ी को अणा जाउतला आउ सेतेबेले ताको करेंसी भाबरे यूज करूतला बट जेतेबेले ब्रिटिशर्स माने देखिले आ तांको सुविधा भी हेलानी इंपोर्ट करिया पे तो बहुत प्रकार प्रॉब्लम भी तांको देखा जेतेबेले देला सेतेबेले से माने कोन करले ना चेंज कर देले सिस्टम टा चेंज कर देले आउ सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड कले ओके तो सेटा सब्जेक्ट्स मान को ओडिसा रो सब्जेक्ट्स मान को ठीक लागिलानी बिकॉज तांको पाखरे जो बहुत कौड़ी भी थिला ताको से भी इनवैलिड हेयला सेतेबेले ता नरेंद्र मोदी नथिले कि डिमोनेटाइजेशन करिवे समस्त लाइन रे आसो आ कौड़ी को चेंज करिकि सिल्वर रे कन्वर्ट कर दियो यू गॉट माय पॉइंट और नॉट बुझे होची कि नै सेतेबेले एक्चुअली ब्रिटिशर्स माने सेटा एटा डेमोक्रेसी नथिला जे कौड़ी तमर जति जति जदी अछि आ ताको तमे कॉइन्स रे कन्वर्ट करके नै जाओ से ताको ब्रिटिशर्स माने तो इंट्रोड्यूस कर देले बट ताको ठीक भाबरे इम्प्लीमेंटेशन हेई परलानी जोटा कि बहुत लोकंकर कौड़ी घरे रहि जाइथिबो आ ताको पिला माने बसी खेलुथुबे जते खेलुथुबे से माने रागुथुबे मन मन रागुथुबे ताको छोटो पिला माने खेलुथुबे से कौड़ी गुडी से माने कहते ब्रिटिशर्स माने हम कॉइन इंट्रोड्यूस कर देले आमे आमे हमर जहां भी सेमिति तो काहे पर तो खाए भी नथिले एते कंडीशन रुइंड कंडीशन थिला पर जहां भी किछि थिला सब चली गेल तो सेटा तांको पर गोटे रागर कारण हो तमे एमिति भी डेमोक्रेसी रे देखुन जेतेबेले डिमोनेटाइजेशन माने हेइतिला सेतेबेले केते वायरल होउतला केते कोन घटना घटुतला राग रुषा माने दंगा फंगा हेई कि पूरा जाळी जुळा देकी केते कोन हेई होतला तो सेई टाइम रे भाबतार जहा हेई कि बुझौछि कि नै तो सेटा दिस वाज ए वेरी मच स्ट्रांग रीजन फॉर establish a for introducing a rebellion against the British rule. So defeating currency system thila. Then one reason also I told death of Jairaj Guru played a very vital role. Okay. जोटा भी सेटा तो गोटे बहुत इंपोर्टेंट रीजन थिला एंड वन रीजन भी गोटे एठी अछि जदि तो इट वुड ऐड करे में पड़ियो कोठी ऐड होछि एटा जस्ट हैंग ऑन अ सेकंड just hang on a second. One reason introduction of Persian and Bengali language कोठी ओडिसा रे in official work ओडिसा रो लोक ऑफिशियल वर्क करिवे बट ओडिया लैंग्वेज जदियो हिंदी थिला बेंगली थिला ताको माने
they were capable to understand this language. But जदि ओडिया थिला एंड पर्शियन एंड बेंगोली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराला माने लैंग्वेज मींस जण बुझी भी जीवो जदि भी बेंगोली भी बुझी होथो जदि लेखिया पे कोइ जीवो केमति लेखिबे को ओडिया लोक बेंगोली कोन तांको जदि लेखिया कोइ जीवो से लेखि भी पारिबी बेंगोली मोर तो एमति बहुत फ्रेंड अछंती बेंगोली फ्रेंड से माने माने ओडिसा रे रहउछंती बेंगोली रे कथा हुअंती बट से माने बेंगोली भी लेखि पारिबे नाउ इट इज से माने लेखि पारिबे बेंगोली मोर बहुत पर्सनल इंटीमेट फ्रेंड्स अछंती से माने भी निज माने लेखा जानना जो माने ओडिसा रे रहिल तुम तो ओडिया ही कहबे ना तो जोठी से जो खुर्दा रे कि आउ सब टेरिटोरी ओडिशन टेरिटोरी से तो ओडिया भाषा जोठी प्रचलित थिला से टाइम सेठी जदी बेंगोली लैंग्वेज को इंक्लूड कर दिया जिवो तो दैट विल रुइंड देयर कंडीशन तांको लाइफ पूरा मिजरेबल हे जिवो से माने बेंगोली रे लेखिया पई भी पड़िबो कहया पई भी पड़िबो ऑफिशियल सब जिंसो तांको सेहितरे ही करा जिवो तो एई जिंसोटा को पर्शियन आ बेंगोली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया वाला ओके सो सेतिर कोन भी सबु जदि भी देखिबा ब्रिटिश लॉस एंड रेगुलेशंस ए सब लैंग्वेज रे ताको माने कोन ए सब लैंग्वेज रे ताको फॉर्मेशन करायाला देन कोड फॉर्मेशन बेंगल रे बिकॉज बेंगल प्रेसिडेंसी थिला इन बेंगल प्रेसिडेंसी and then extended to and introduced to Odisha. Sorry. Also, it was not translated. ओडिसा रे ट्रांसलेट ओडिसा को जतले पहुंचीबो से लॉज गुडा पहुंचीबो ताको ट्रांसलेट भी हबोनी से पर्शियन लैंग्वेज और बेंगोली लैंग्वेज रे ये ताको ही ताको इंटरप्रेट करिया पे पड़े सो व्हाट हैपेंड दिस वाज नॉट जनरली अंडरस्टूड बाय ओडियास अल्टीमेटली कौन हला ए जो जतबेले रूल्स गुडा जतबेले हला अल्टीमेटली ए रूल्स गुडा जतबेले रूल्स तो बेंगोली और पर्शियन रे लिखा हितिबो ताकू तो अंडरस्टैंड करि हबोनी बिकॉज़ समस्त कोन आ अंडरस्टैंड करि परिबी कि अल्टीमेटली इट hampered what or created barrier to understand the newly formulated laws okay created by sorry codified by British officers so what happened the judicial system in Cuttack was completely defective पूरा माने जुडिशियल सिस्टम टा ही पूरा डिफेक्टिव है याला बिकॉज़ इट वाज अनएबल टू प्रोटेक्ट द it was unable to
protect the people from torture, so that in that state of desperate misery, and irritation, people rose in arms against teachers. ଲୁଣ ଦେଲ ନାହିଁ, ଓକେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଣ କଲେ, ଲୁଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଟैक्स बढ़ाई देले, घरे जो कौड़ी थिला ताको भी इनवैलिड कराई देले, खाइए माने भातरे मारले, हातरे मारले, सबुथिरे मारले, माने खाइबारे भी मारले, ताको रोजगार भी मारले, तापर पुणी आ गोटे कंडीशन कोन कर देले से माने ठीक अछि, माने खाइया को भी नाही, पिया को भी नाही, रोजगार भी नाही, ठीक अछि, माने शांति रे लोक बंची भी पारलानी माने इन द मीन्स माने लॉज एमती का बनेबे, से लोकटा जदी भाबिथिबो जे ना मु मोर किछि होबनी, मु आराम से घरु जाई को घरु बाहर को जीबी, मुने बाहर फेरी आसबी, संदेरे फेरी आसबी, से गोटे कोन नुआ लॉज टे बने देथिबे, से बुझी पानु तो अंडरस्टैंड कर पानु तो ताकू ब्रिटिशर्स माने धर के नै गेले, से घर को भी फेरी पारलानी, माने से माने बंचीबाटा तांको पय गोटे से माने भाबिले जे आमे काहे जन्म होइछु, जे माने सब किछि माने तांको सहित गोटे कॉमेडी हो गेला लाइफ टा, एक्चुअली लाइफ टा गोटे कॉमेडी, माने एमिति एमिति का भी जन को କରିଦବ ଯେ ସିଏ ତାପରେ ବି ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ବି ହେଇଥିବ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ, ମାନେ ଯେତେ ବଡ ବି ସେ ସୁରମା ହେଇଥାଉ, ତା ପଛରେ ତାକୁ ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ବଞ୍ଚିବା ତ ତାର ତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ନା, ହାତରେ ମାରିଲେ, ଭାତରେ ମାରିଲେ, ଏପରିକି ତାର ମାନେ ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଲଜ ବି ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଲଜ ଗୁଡା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଟା ସେ ବୁଝି ବି ପାରିଲାନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ଜୋକ୍ ଫର ଦ ପିପୁଲ କରିଦେଲେ, ଏମିତିକା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ, ତ ସେଠି ରେବେଲିୟନ ହବ ବୋଲି ତାର ଆଉ କଣ ହବ, ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଲଜିକାଲ ପଏंट, ଠିକ ଅଛି, so this is the Persian and Bengali language in official work, okay, ସେମାନେ ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ରୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେ କେମିତି ବୁଝି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, 1600 ମସିହାରୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେଣି, ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲଚର ସହିତ କେମିତିକା ଆମକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଲଚର ସହିତ ମିଶିଲେ ହିଁ, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ, ଏଠି କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଏଥିରେ କରପସନ ହବ, କରପସନ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିବ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଇକି ରେବେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, so this was the main reasons for which this resistance movement was happened, okay, तो ଏଇ ସବୁ ରିଜିନ ପାଇଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ବିଗାନ ଇନ 29th ମାର୍ଚ୍ଚ 1817 କଣ ହେଲା ସେ ଟାଇମ ରେ 400 କନ୍ଧ ଅଫ ଘୁମୁସୁର ଇନ ଗଞ୍ଜାମ, ଓକେ, sorry, entered Cuttack, ସେମାନେ Cuttack towards, they marched towards Cuttack and joined by the Paikas and ଦଳବେହେରାସ of ଖୁର୍ଦ୍ଦା, ଓକେ, ପାଇକ ଆଉ ଦଳବେହେରା ଯୋଉ ଖୁର୍ଦ୍ଦାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ, ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଟା ମାନେ କଣ ମାର୍ଚିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ କଟକ ହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଫେଜେସ ଟା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଠୁ, ଓକେ, attacked
କହିଥିଲି ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ସେ ସଲ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଛନ୍ତି। ଓକେ, so group of rebels, what they did, entered Cuttack, looted government buildings and attacked police stations. Salt agents, these things were happened by the Paikas, Kandhas, Dalaveras, these people. Just a second. Then this uprising quickly spread to which area? Khurda and neighboring areas. Attacked British government buildings, treasury, depots. Okay. Hang on a second. Then they declared independence, proclaimed rebels Raja Mukunda Deva III as their leader and independence from British. At that time, Puri, which was the religious center, was seized by or captured from Britishers. By whom?
by the पाइकस पुरी को समाने तांको अख्तियार को नहीं गले and one thing guerrilla warfare माने जंगल रे लुचि की आक्रमण करिवा okay this was applied against Britishers by the pikers because they were expert in that skills okay Jagabandhu and his followers adopted by Jagabandhu and his followers okay so what they did frequently changed their location hiding places so what happened it ultimately making or it was a big challenge for Britishers. Britishers to suppress the so Battle of Kila was a significant confrontation between the rebels and British forces. Rebels and British forces. Then they did fire resistance, but eventually British जो ब्रिटिशर्स माने जो फायर्सली ताकू माने डाउन कर देले पूरा ताको रेबेलियन टाकू सेटा होची तांकर डिफीट हैला पाइकस मानकर डिफीट हैला परे बट डिफीट वाज happened for Pikers. And capture of Bakshi Jagabandhu was happened. He was captured in 1818 by the British forces. So it was his capture was a turning point. एटा ही तांकर टर्निंग पॉइंट हैला the rebellion and led to the suppression. Rebellion. केमिति तापरे तार सप्रेशन हिची एक्चुअली मार्शल लॉ सप्रेस केमिति होची माने हैला ब्रिटिशर्स माने केमिति सप्रेस करचंती एई रेबेलियन टाकू मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस कर देले इंट्रोड्यूस मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस कर ब्रिटिशर्स माने बाय ब्रिटिशर्स खुर्दा एंड पुरी एंड पिपिली 18 अप्रैल 14 अप्रैल 1817 रे से माने से ही स्टार्ट कर मार्शल लॉ स्टार्ट कर देले एंड जो परगना ऑफ प्रगना ऑफ लिम्बाई एंड कोटिदेश एक्चुअली पुरी रे पुरी किंग का अंडर माने पुरी टेरिटोरी अंडर आसे आ एटा होची खुर्दा रे से जते बळे पाइको रिबेलियन पूर्व जो खुर्दा रिबेलियन हितला से टाइम रे से लिम्बाई परगना को भी ब्रिटिशर्स माने अख्तियार करनी थिले जो द्वारा खुर्दा रो जो राजा सेतले बहुत
अनप्लीजेंट और बहुत एंगर माने एंग्री हेतिले ब्रिटिशर्स मानको ऊपर सेतबे तांको फेरेले नाही से मराठा मानको अगेंस्ट जेतबे ब्रिटिशर्स माने सेतबे लढिले लढी की मरा से होची माने तांको कोन तांको सहित एग्रीमेंट करथिले राजांग सहित जे आमे आपनको टेरिटरी फेरेई दब एंड जेमतिका मुगल बंदी शासन करचंती सेमितिका सॉरी गडजात शासन करचंती माने आपनको अंडर रे रहइबो आपनको टेरिटरी बट आमको किसी ट्रिब्यूटरी देबे से बेला करिए बट से माने कोन कले ट्रिब्यूटरी दबा ना रे कहले ना हमें डायरेक्ट पूरा टेरिटरी को हमें नहीं जिबो तो सेइतरे ही से तापर धीरे धीरे गोटे गोटे पर कैप्चर करिया जेमति लागिले तो सेठू राजे तापर तांको विरुद्ध रे स्टार्ट करथिले खुर्दा अपराइजिंग स्टार्ट करथिले से दैट लिम्बाई रीजन दैट लिम्बाई परगना ओके आउ जेतले ब्रिटिशर्स माने ब्रिटिशर्स जेतेबेले तांको वे टू पुरी पर्यंत जेतेबेले से माने गले सेतेबेले कोन ना बहुत गुड़ा विलेज पड़थला जेमति के बाजपुर बहुत एरिया रे बाजपुर आ कदलीबारी एटा तो खोर्धा पटे रहउची विलेजेस रे तापंग कणास नुआगांव हेवी रेजिस्टेंस सेमानकू ब्रिटिशर्स माने they got heavy resistance from the pikers okay got heavy resistance এই ସବୁ রিজিয়ন রে एंड रेजिस्टेंस हेई कि भी से माने तापर धीरे धीरे से माने कोन करथिले एई सब रीजन छोडार निया लगे दीथिले पूरा ब्रिटिशर्स माने पूरा माने पूरा बर्न हेई जाथिले विलेज छोडा बायता ब्रिटिशर्स माने निया लगे दीथिले तापर कैप्चर जतले राजा हेई गेले सेतबेले ब्रोक डाउन द स्पिरिट तो सेठी होची बक्सी जगबंधु को जतले कैप्चर करने छी राजा जतले कैप्चर हेई छी तो सेतबेले रिबेलियन टा पूरा तार जो फायर टा पूरा एक्सटिंग्विश हेई छी that is the phase of that rebellion now what are the consequences actually तार बहुत गुड़ा consequences रहिला जेमति एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आसिला जेमति का कहउतली prompted Britishers to reconsider their administrative policy and a local representation in decision making also was happened आउ तांकर जो से पर्शियन एंड बेंगल लैंग्वेज ताकू भी से उड्र करने गले उड्र माने उड्र तो ता सहित ऐड करले वर्नाकुलर लैंग्वेज vernacular translations was additionally done by Britishers for the understanding and interpretation of laws made by them. Okay, vernacular translations of law. Introduced. Unity among natives
This was also united different sections of society. ए रिबेलियन टा कोन जेतेबेले मु स्टार्टिंग रे तो कहितली बक्सी जगबंधु ब्राह्मण्स एंड वारिंग क्लास पाइकस एंड अदर्स आल्सो समस्त को से यूनाइट करितला जो द्वारा गोटे सेंस ऑफ यूनिटी एंड सेंस ऑफ नेशनलिज्म वाज established in the hearts of subjects of Odisha against the British power to eradicate the foreign yoke. Okay, तो एमान को बाहर करिया पई आउ मदर इंडिया को फ्री करिया पई मदर इंडिया तो न सेतल ओडिसा को फ्री करिया पई ताको मन रे होची गोटे सेंस ऑफ यूनिटी that was fostered and shift in British approach also. British मानकर approach रे sorry ताको approach रे भी गोटे बदलाव आसिला. Okay, which बदल को बदलाव आसिला confrontation to cooperation. Confrontation to माने confrontation न करी कि सामना रे कोऑपरेशन रे केमते काम आमे निजरो उठे नवा सेटा ब्रिटिश माने बुझी गले जे मन को काहे कि ना माने रेबेलियन कले पूरा. ओके, also taking inputs from local leaders to address grievances. They had done economic changes also. Okay, the British government reduced salt price, किंतु मोनोपोली छाड़लेन सॉल्ट प्राइस को रिड्यूस कर देले हेले. Attempted to alleviate or economic hardship of faced by population. आज किसी ब्रेक नबने एक्चुअली टिके जल्दी जल्दी सारिबा तो नो नीड ऑफ ब्रेक. ठीक अछि. ओके, देन what cultural significance also कौन कल्चरल सिग्निफिकेंस ब्रिटिश मानकर दैट कौन सिग्निफिकेंस रहला जोटा दैट जो से माने जो कौन जे ए जो रिबेलियन टा एटा होची कौन गोटे रेजिस्टेंस देले ब्रिटिश ऑपरेशन एंड माने ब्रिटिश ऑपरेशन अगेंस्ट गोटे रेजिस्टेंस. दिस वाज and became a source of inspiration for future generations also. Okay, in the struggle for Indian independence, so this was a source of inspiration. What this resistance? Source of inspiration.
for future generation. To fight against British हुकूमत, to get independent. How कौन है? Britishers what did? Initiated infrastructure development. And introduced modern administrative system to demonstrate their जे benefit होची colonial rule रे benefit होची. Okay. Introduced modern administrative system. Modern administrative system to demonstrate as benefits of colonial rule. So these are the result of the positive results. These are the positive results for the big sacrifice done by the subjects, especially the Paikas of Odisha. ठीक अछि. आपरे जदि आमे तार conclusion देखिबा, it was a first political upheaval which was popular as anti-British character. 1870 to 24 first ଗୋଟେ ମାନେ full fledged रे जो revolt जोटा को कह जीवो, this revolt was a first political because politically एथिरे much involvement देखा जाइछि which was popular. Perhaps it was the first Indian independence movement until with true symptoms of revolutionary character with the objective to free the motherland. Okay. And also the combination of जोटा हमें देखिले economic, social, cultural factors. Okay. The combination of social factor which ultimately gave some benefits to
The subjects of Odisha. So this was all about the Paika rebellion. Okay. So it was a indelible mark on the history of Odisha and India's fight for independence. Now we will move to the next part. Next, जोटा रही कोटा हम रेजिस्टेंस मूवमेंट रे जो नेक्स्ट पार्ट अछि, that is the Odisha during the revolt of 1857 and the role of Surendra Sai. Okay. So Veera Surendra Sai belongs to the Chauhan dynasty. He was the fourth. He was the descendant of fourth ruler of Chauhan dynasty. So, यार actually keyword टा होची doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Doctrine of lapse माने होची कौन ता माने? Doctrine of lapse रो कौन रही actually? ओके मु कहूची. तो जदि केही नेचुरल हायर नथिबे कोनसी किंगडम रे तबे ब्रिटिश Natural hire means माने बायोलॉजिकल हायर जदि के ओके नथिबे ओके बायोलॉजिकल नेचुरल हायर्स माने मु कोन बुझिबी. ओके ठीक अछि तो तांकर कोनसी यदि लीगल हम जदि कहबा लीगल बायोलॉजिकल तांकर सक्सेसर जदि केही नथिबे हायर्स भी तांको कहबा देन सेही पॉलिसी की यूज करके जदि केही न रहबे वंश बढ़े पई तांकर जो वंश का चिराग जोटा कहंती तो सेटा होची ब्रिटिश एनेक्सेशन अंडर को पळेबो आ कोन दे सेही पॉलिसी की यूज करिकी से पॉलिसी को के लॉर्ड डेलहाउसी यूज करिकी बहुत माने सेतबेले से एनेक्सेशन से करचंती बहुत लैंड से तांको नै चंती. ओके सो to annex native states without direct legal yes. Ellora kintu but you told one thing natural hire means I was just astonished. Well, natural hires means what? ठीक ଅଛି କିଛି प्रॉब्लम नहीं जे. ओके देन तो वीर सुरेंद्र साय दैट एठी जो तांको सेतबेले ये हिची रेजिस्टेंस मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश हेजिमनी बाय Surendra Sai. Okay. It was a sensational story of heroism and another son of the soil. Odisha manko mati manko what another sensational story of heroism. At the Paika rebellion of 1817 जो Paika rebellion टा में देखिलु it created a sense of resentment in the minds of people of Odisha against the barbarous British rule. एटा ही तो ऑलरेडी ताको माइंड रे माने ये माने रिसेंटमेंट क्रिएट कर रखितला जहा फल रे द ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन एंड hatred against the British authority gradually faded away in the coastal region of Odisha by the lenient policy of government. जोटा आमे जो देखिलु ताको consequences रे ए जो सब सॉल्ट टैक्स ये हैला तापरे बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करले तो बट द नेकेड ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वाज क्वाइट विजिबल. कोडी देखा होतला with the arrival of Lord Dalhousie at the governor general of India. He wanted to do what? Grab as much as native states by the implementation of doctrine of lapse. Okay. ए पॉलिसी को सी यूज करिकी से माने से तांको एक्चुअली से चाहूतले पूरा स्वप्न भी से देखुतले
that fanatizing that पूरा टोटल माने टेरिटोरी को से तार स्वप्न से देखुतले ओके कैप्चर करिवार स्वप्न से देखुतले then Narayana Singh was placed on the throne of Sambalpur after Mohan Kumari actually जो चौहान डायनेस्टी रे जने जो किंग थिले महाराज साई बोधे यस महाराज साई हिज डिसीज्ड वाइफ एक्चुअली से डिसीज्ड किंग रो से वाइफ थिले तो मोहन कुमारी तांकु ब्रिटिशर्स माने होची माने से डायनेस्टी टाको माने से थ्रोन टाको एसेडन करिया पई से सेतेबेले कहितिल माने तांकु देइथिले चांस देइथिले सेइतरे ही एक्चुअली तो मोहन कुमारी जतले आसिले सेई टाइम रे ही सुरेंद्र साय रिवोल्टेड and he was जतले रिवोल्ट कल he was captured with his brother Udanta and uncle Balaram then were sent to Hazaribagh jail okay आ एई हजारीबाग जेल रे ही जतले से थिले सेई टाइम रे ही 1857 रिवोल्ट द्वारा से जो माने रिवोल्ट करूथिले से माने से जेल टाको भांगी देले पूरा चूरमार कर देले और फ्री कर देले सब जो से प्रिजनर्स मान को सब फ्री कर देले तो सेटा ही अल्टीमेटली तांको हेल्प कला देन से माने इट क्रिएटेड अ सर्कमस्टेंस फॉर रिलीज ऑफ सुरेंद्र साय फ्रॉम दैट जेल हु गेव वे टू फाइट टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज तो सेउडु से तापरे रिवोल्ट करचंती रिवोल्ट अगेंस्ट करचंती ब्रिटिश पई तांकर पर्सनल भी कॉज थिला जोटा कि से राजगादी को हासिल करे को चाहूतिले बट सेठी तांको मिलला नाही बिकॉज ही वाज नॉट द डायरेक्ट legal heir he was actually the descendant of that one Chauhan dynasty king okay so that सेति पय तांको ए हेतला आ सी भी माने तांकर भी जेतु से एस्पिरेशन रहितला तो से रिवोल्ट करथिले सो ना आमे एडी देखिबा वर्तमान just a second तो yes डॉक्टर तापर सपोर्ट ऑफ जमीदार तांको एक्चुअली थिला सपोर्ट ऑफ जमीदार से उठो देखिबा हां यस सपोर्ट ऑफ जमीदार रे तांको केवल जमीदार नु जमीदार एंड many tribal leaders also because ए ट्राइबल लीडर्स माने काहे तांको सपोर्ट करथुले तांको पीरियड ये जेहेतु सेटार लोकलाइट्स थिले आ ये जेमिति का एडमिनिस्ट्रेशन टा को बुझी परथुले जेमिति ट्राइबल लैंड को से माने ट्राइबल मान को पकर लैंड कॉन्फिस्केशन करी नथिले बट ब्रिटिश माने जतबेले आसिले तो से माने ट्राइबल लैंड को कॉन्फिस्केट करबा आरंभ कर देले तो सेटा तांको बहुत रिसेंट कल आ ट्राइबल लोक मानकर जदी जमी चाली जिवो ताले से माने they are much and more sensitive for their land ठीक अछि आ से माने आ ये भी माने मेन स्ट्रीम रे भी आसी कि से माने से टाइम रे भी एबे भी मध्य जो माने जंगल जमी रे रहउछंती से माने भी मेन स्ट्रीम रे आसी कि तांको पई लाइव गुजर बसर करबाटा एत सहज न से माने गोटे माने ऑर्डिनरी लाइफ को से माने बिलोंग करि परिबेनी so सेटा तांको बहुत that created a very great resentment among them
तो सेति पय से माने यांको सपोर्ट कले ठीक अछि आ होची मैं ट्रैवल से माने कोन थिले डिसकंटेंट थिले एक्चुअली with British rule. And is rebellion represented the unity of various sections of society against British oppression. एटा परे मु या परे मु क्लास भी वाइंड अप कर देबी आउ जति की जो हमर जोटा एक्चुअली मु देखौची एटा थिला बोधे that is the Paik rebellion Veer Surendra Sai and revolt of 1857 एटा हमर आज क्लास रे कंप्लीट हे जबो देन रहि जबो क्रिएशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस एटा होची ओडिशा प्रोविंस एंड फ्रीडम मूवमेंट एटा को हम नेक्स्ट क्लास रे आ ता सहित जो ओडिया लिटरेचर लैंग्वेज फॉर्मेशन जोटा केमति कहिची सेटा को हमें नेक्स्ट क्लास रे वाइंड अप कर दो सेटा भी टाइम भी हे जबो हमें सेतिर भी छाड़ दो बिकॉज़ आज भी हमें या पर वाइंड अप कर देबे हला बेसी आगु ने आर माने गत क्लास रे मु बहुत टाइम लेनी थिली तो स्टूडेंट्स माने भी बहुत माने आपा हरे दिथिबे पूरा बहुत टाइम लागु छे ठीक अछि कोन करै जिवो ओके so against the unity of various sections of society against the British oppression. So resistance at that time started against British. से टाइम रे रेजिस्टेंस स्टार्ट हैला केमिति despite facing heavy resistance no despite facing heavy military operations from Britishers or from British ये करूले नेम जदि मने रहिला तो नले केवल ब्रिटिश लेखिले भी किछि प्रॉब्लम नहीं सुरेंद्र साय and his followers continued their resistance. British actually attempts to British attempted to suppress the revolt.
Okay, and we will see the influence of 1857 revolt. कौन तार influence भी थिला ए माने तांकर जो सुरेंद्र सायंकर जो ये रे तांको रेबेलियन रे भी तार कौन influence रहितला that outbreak of 1857 रे जोटा हम कहली सेतलो रिलीज ऑफ सुरेंद्र साय फ्रॉम हजारीबाग जेल. Okay, and he saw the opportunity. What opportunity he saw? He saw the opportunity to 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 capitalize on the widespread discontent against the British so it was a great opportunity for him to fight against British. Okay. So what he did, he engaged in negotiations. First, तो माने से कौन कले engaged in negotiations with the British. कौन negotiation जे मते recognition करो दियो मते recognition जे I will be the king of Sambalpur. Is the right king of Sambalpur. Sambalpur. Okay. Then when किंतु बट जतबे नेगोशिएशन फेल्ड हेला से डिक्लेयर्ड ओपन रिवोल्ट. Negotiation failed, declared open revolt. In November 1857. Got it? अच्छा. Then he very cleverly से कौन करथिले तांकर जो सपोर्टर्स माने बिकॉज जेहेतु से आइडिया भी माने तो नौथिले ना बाकी जो सब जेमति का पाइको रिबेलियन रु आइडिया नेले बाकी सब रिबेलियंस रु भी से देखिथिबे आ बहुत सब जेहेतु सी भी राजघरान रु बिलोंग करन तांको भी होउची विभिन्न प्रकार टैक्टिक्स तांको जणा थिला
So cleverly he positioned his supporters in key locations to disrupt the British operations. की पोजिशन रे की लोकेशन रे रखिले ब्रिटिशर्स मानकर सब इनफॉरमेशन भी से गैदर कर परथुले आउ से जगह रे से जेहेतु से फेवरेबल कंडीशन रे थिले सेठी तो सेठी से ये कर परथुले आ लोकल जमींदार ट्राइबल लीडर्स आल्सो माने जॉइंट समको तांको जॉइन करथिले तो जोटा की वाइड स्प्रेड रिसेंट अगेंस्ट ब्रिटिश जोटा की डेमोन्स्ट्रेट करथुला ओके एंड वन थिंग आल्सो एई जेतेबेले तांको रिबेलियन भी से स्टार्ट करथिले से तापरे धीरे धीरे कोन होतला स्लोली विथ द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस इन लीडरशिप आल्सो हैपेंड केमितिका लीडरशिप चेंज रेबेल्स मानकर भी ब्रिटिशर्स मानकर भी केमितिका दैट लीडरशिप चेंज होतला ड्यू टू माने फॉर रेबेल्स आल्सो फॉर ब्रिटिशर्स आल्सो समस्तंकर माने लीडरशिप चेंज होतला बिकॉज़ ड्यू टू द डेथ्स डेथ भी होतला आक्रमण करबा द्वारा मारी की से माने अन्य मान को युद्ध माने रेबेलियस एक्टिविटी रे डेथ्स एंड replacement of British officers and rebels also rebel leader got it but rebellion remained resilient केमिति resilient hmm, hmm. by the ongoing activities done by rebel group okay in that process countermeasures for Britishers that responded with military operations led by various officers but the thick forest terrain जोटा कि सेपट जो संबलपुर रीजन टा दिस वाज द रीजन ऑफ very thick forest cover so this hindered their efforts दे जोटा जो ब्रिटिशर्स माने जते भी ट्राई करथुले बट तथापि तांकर फेवरेबल कंडीशन थिला फेवरेबल माने फेवरेबल कंडीशंस कोन माने रही परिबो ब्रिटिशर्स मानकर जे जेमिति दे हैव मैन पावर surplus surplus कोन arms and ammunitions surplus arms and ammunitions and one thing what surplus revenue they got huge revenue so these are the things favorable always for Britishers okay made one countermeasures also medical officers were also attacked
and British troop faced casualties आज वाइंड अप कर साला पर क्लास रे मो क्वेश्चन बट देबी जे यू शुड राइट एबे होची लेखिबा टाइम टा तमे तो एबे क्वेश्चंस तो जहां भी होची आसुची जहां भी माने जहां भी हेची बट मु आज ए क्लास रे क्वेश्चंस देबी एंड प्लीज स्टूडेंट्स यू शुड राइट ए क्वेश्चन शुड प्लीज अटेम्प्ट करो इट विल बी अल्टीमेटली बेनिफिट कारण बिकॉज तमे तो जहां भी प्रिपेयर करथबो क्वेश्चन टा को राइट कर इथरे तो बेसिक क्वेश्चंस भी नाही जहां भी आसीबो प्रोबेबल क्वेश्चंस मु देले बाय चांस जदि सेटा भी प्रेडिक्शन रे बिकॉज जदि टॉपिक कंटेंट कम थिबो सेटा केतेटा क्वेश्चन से माने करि परिबी तो इट विल बी अल्टीमेटली बेनिफिट फॉर यू बेनिफिशियल फॉर यू ओके स्टूडेंट्स okay then so British medical officers were attacked and British troops faced casualties in engagement with the rebels okay now एमिति हला परे फेवरेबल कंडीशन जोटा मु कहली ब्रिटिशर्स मानकर तापरे धीरे धीरे एटा सप्रेस हवा को लागिला एंड सप्रेस हला परे सुरेंद्र साय को सरेंडर करिया को he was forced to surrender okay due to huge money and manpower जोटा मु एबे कहली and advantageous position of British in the rebellion he has to surrender okay he has to surrender and facing relentless British pursuit and changing circumstances केबे सरेंडर से करतले 1862 रे facing related British pursuit and changing circumstances okay he and his followers they were granted pardons but his surrender it marked an end
Excuse me. Are you saying something? Because it seems you're muted. Mute हीजिए. Hello. ସୋ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି। Yes, sir. କିଛି sound ଆସୁନି। Actually, students, I talked to Nikhilesh sir. I don't know, maybe he is facing some technical issues. So I think it's was he going to wind up now or what? I think we can wind up the class otherwise. Huh? Yes, sir. Yes, sir. We just wind up the class. ठीक है? Hang on a second. I don't know what happened. Recording in progress.